Hello everyone, good evening, welcome to the class. Hopefully आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बता दें आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है। स्क्रीन क्लियर है। ओके बच्चे, सो गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास। होपफुली अब आपको आवाज साफ सुनाई दे रही होगी। सबसे पहली बात कि आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज का हमारा क्लास है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को पता है कि जैसे कि अब आप नेक्स्ट ईयर आफ्टर दिस यू वुड ट्राई टू appear in certain competitive examinations for different academic as well as professional courses. So for that, numericals as well as NCERT book plays a very important role. Okay, so you guys should be very keen and very interested while doing the exercises and the different numericals that has been there in your different text references or NCERT books. So as a part of that, I would try to introduce this part, which is very important, and almost on every Saturday we will try to introduce the solving of numericals from the exercises of the your 12th NCERT book. So उसका पहला जो आज आपका टॉपिक है, क्योंकि बच्चे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें आती है, whether they are NEET aspirants, whether they are JEE aspirants, सबसे बड़ी प्रॉब्लम फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में आती है। सो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगर आप क्लास में ही न्यूमेरिकल्स को और एनालिटिकल क्वेश्चंस को सीरियसली ले लेंगे, सो दैट विल नॉट बी अ बिग डील फॉर यू, बिकॉज इफ यू हैव मेड अ गुड फाउंडेशन फॉर दैट, you are not going to face any trouble in solving those numericals. So बच्चों, आज फर्स्ट चैप्टर है। जो जो बच्चा जुड़ा है प्लीज अपना नाम जो है वो चैट बॉक्स में लिख दे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट योर लेक्चर्स में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज एक साइड पे कर लेता हूं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ा था। कूलम लॉ क्या कहता है? जो भी दो पॉइंट चार्जेस, इफ वी आर हैविंग 2 पॉइंट चार्जेस, दे आर प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, गॉट इट, they are placed at certain distance, then there will be a interactive force between them. Okay Abhinandan, welcome beta. There will be a interactive force between them. Number 2, that force depends upon the product of the charges, and that also inversely depend on the distance between those 2 point charges. Got it? So that force, if it is a F, then it is going to be 1 by 4 pi epsilon naught. This is epsilon naught. Q1, if Q1 is one of the charge, Q2 is the another charge, the magnitude of those charges, and R is the distance between them, then it's square. This is the value of the force of interaction, whether it is attractive or repulsive. We are just dealing with the magnitude. अभी तक हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। So magnitude would be 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R का square. Got it? Here, this 1 by 4 pi epsilon naught, this is an electrostatic force constant, and its value is 9 into 10 raised to power 9 units. Okay, itne units. And what are the units? Unit for this will be Coulomb square per Newton per meter square. Got it? These are the units for that. What is epsilon naught? Beta, this is absolute permittivity, and it is permittivity for free space, that is vacuum or air. That is almost equivalent. Got it? That's okay. So after that, in the last class we have dealt with the charges. If there are lots of the charges, we are having more number of charges, they are applying force on one charge,
the total charge will be the sum of all the individual forces. Got it? That was the superposition principle. Now let's go for this first question. But try to have your NCERT book in your hands when we are solving these numerical problems here. That will be very helpful for you guys to explain, because for explaining half of the solution of this numerical that is there in the reading of this, इसकी रीडिंग से ही आपका आधा numerical solve हो जाता है. Okay, so for that you should have your textbook in your hands. Got it? So first question is what, अगर आपको टेक्स्ट क्वेश्चन के थोड़ा सा देखने में कोई ट्रबल आ रही है, यू कैन हैव योर फुल स्क्रीन योर मोबाइल if you are using the mobile phones, otherwise it would be fine. What is the force between two small charge spheres having charges of this and this value, placed 30 centimeter apart? Got it? So what is given to us? I would solve it here. It is question number 1.1. What is given? You are having two spheres. Two charge spheres are there. Let it be Q1. Let it be Q2. The distance between these two charge spheres is R. This is given to us. Got it? Now, what are the values given to us? हमें बताया गया है Q1 is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 Coulomb. एक चार्ज. Second charge Q2 is equal to 3 into 10 power minus 7 Coulomb. Two charges are given. दोनों charges की value दी गई है. They are placed 30 centimeter apart. Means उनके बीच का distance कितना है? R जो है that is 30 centimeter. But centimeter is your CGS unit. We have to get it into the SI units. So क्या करते हैं हम? सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए we have to divide it by 100. So what do? You would get the value 0.3 meters. Got the value? Q1, Q2 are, you find the value. Now go for that. What is the force? हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है फोर्स. फोर्स क्या होती है? पता है हमें. 1/4 पाई epsilon naught Q1 Q2 upon R का square. This is the formula. Got it? Once again, all those who are connected, please write down your names in the chat box. Okay. Now, ये जो first part है बच्चों आपका 1/4 pi epsilon naught. It has a value. What's that value? 9 into 10 raised to power 9. कलेक्टिव है. Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों आपके पास? 2. ये देखिए, दिस इज Q1, दिस इज Q2. मल्टीप्लाई मैं यहीं पे कर देता हूं. ठीक है. Q1 कितना है? 2 इंटू 10 माइनस 7 और Q2 कितना है? 3 इंटू 10 माइनस 7. बेटा इनको मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7, 10 की पावर माइनस 7. Basis same, powers will be added. Got it? Divided by R square. What is R? R's value is 0.3. So it's square. Got it? समझ आ रही है बात? चलिए, you just have to solve this. Okay? कीजिए सॉल्व. क्या सॉल्व करेंगे आप? So I am moving here. F is equal to 9 into 10 raised to power 9. बेटा ये जो है 9 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो. यू विल गेट व्हाट?
9 6 जा 54 into 10 की पावर 9, 10 की पावर -14. Basis same powers can be added. So 10 की पावर -14 प्लस 9 क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? -5 डिवाइडेड बाय 0.3 है. 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09. Got it? 0.09. So एक बार फिर से लिखता हूं 54 इंटू 10 की पावर -5. बेटा 9.09 जो है इसको मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 10 की पावर -2. कोई प्रॉब्लम है? बेटा ये जो 10 की पावर -2 है जब न्यूमरेटर में जाएगी बन जाएगी 10 की पावर +2. ओके, और दिस 9 1 जा 9, 9 6 जा 54. सो 6 इंटू 10 की पावर -5 ऊपर था और नीचे से -2 ऊपर जाके +2 हो गया. पावर्स वुड बी एडेड. 6 इंटू 10 की पावर -3. क्या ये फोर्स है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन. So this is the value of force between the two charged bodies which are placed at certain distance. Got it? यहां तक किसी की कोई क्वेरी है तो वो मुझे बता सकता है. समझ आ गया ये सबको? किसी का कोई इश्यू है? किस किस को समझ आ गया है? जिसको समझ आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ 1 लिख दे चैट बॉक्स में. Got it? चलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं. चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. ओके, थैंक यू. चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे. क्वेश्चन नंबर 1 से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्या है क्वेश्चन नंबर 2? अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Yes, Avinandan. Yes, we will get to those shortcuts. Okay. First, we will try to solve certain questions. Got it? So, as we would be there in some numericals further, we will get to those shortcuts also. Okay? So, जल्दी से हम shortcuts तक भी पहुंचेंगे, पर पहले थोड़े से कुछ numericals कर लें ताकि एक थोड़ा सा हमारा रिदम बन जाए. Got it? Next now. What is the force, the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb? Anjali, I don't think myself being in black and white will have anything with the electrostatic force, isn't it? Okay, the electrostatic force on a charged sphere. बेटा चार्ज स्फीयर है हमारे पास एक क्या है? चार्ज स्फीयर है. चलिए, just like that, we are having a charge sphere of charge 0.4 microcoulomb. 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb. So it is plus, another one is minus. One is positive charge, another is negative charge. In air is 0.2 Newton. Force is given to us as 0.2 Newton. Number 1. What is the distance between the two spheres? First question is, what is the distance between the two spheres? Number 2. What is the force on the second sphere due to first?
That is another. First question, first point is, what is the distance between the two spheres? Let's go for that. The electrostatic force on small sphere. So two spheres are there. Let it be Q1 is there and then Q2. One is question number 2. Q1. What is Q1, बच्चों? 0.4 microcoulomb. What is microcoulomb then? Microcoulomb means 0.4. Micro means 10 power minus 6 coulomb. Micro means 10 की power minus 6. Okay? And coulomb. Q2 is equal to minus 0.8 microcoulomb, and I am writing directly as micro as minus 6. So it is minus 0.8 10 power minus 6 coulomb. Got it? Then force. What is the value of the force, bachcho? F is equal to 0.2 Newton. Fine. What we have to find? R is equal to, we have to find the value of the R. What is R? R is the distance between those two sphered charges. Okay, those charge spheres, the distance between them we have to find out, but we have to get the value of the force that is given to us. Got it? So what is the value? F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon arc square. Got it? What we have to find, move that thing to left hand side. So what we have to find? We have to find the value of R. So move that to right hand side. So R square will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught. That means 9 into 10 raised to power 9. Q1 is 0.4. We are not taking the signs. Okay. We are just taking the magnitude. So 0.4 into 10 power minus 6 into 0.8 into 10 power minus 6. Okay, minus 6. Just 10 power minus 6 divided by R we have to find. So force, here it is F, F is 0.2. F is 0.2. Just solve this part. Just solve this part. So R square is equal to, beta देखिए 9, okay, into 10 power 9. 10 minus 6, 10 minus 6. Basis same powers can be added. All 10 powers has been there. Into 0.4 into 0.8. 0.32. Divided by 0.2. Got it? Solve all these things. Solve all these things. 10 power 9 minus 12. That is minus 3. Okay. When you will solve this thing, you are going to get the value that will be 144 into 10 power minus 2. Sorry, 10 power minus 4. So R square is this. We need R. R is equal to square root of everything. Square root of this square. What is the square root of 144? That is 12.
And what is the square root of 10 power minus 4? It is 10 power minus 2. Solve it. That will be 0.12 meter. That is the answer. So what is the value of the distance? The distance would be 0.12 meters. Got it? समझ आ रहा है सभी को? शाबाश. यहां तक किसी की कोई क्वेरी है तो बता सकता है. ठीक है, 2 क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे. अब आपको एक रिदम बनना आ गया होगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को मैं नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ रहा हूं. मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चों. ये क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 हमने ऑलरेडी किया हुआ है, तो इसीलिए मैं इसको ले लेता हूं. Question number 3 is homework for you guys all, because it is based upon the dimensions. So who is ready to solve question number 3 by yourself? So it is homework for all of you. Question number 3 मैं आपको समझा देता हूं, but I am not solving it here today. So because it is very simple based upon the dimensional analysis. All of you have done the dimensional analysis in class 11th. Check that the ratio. बेटा रेशो दी गई है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी. के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है. ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. जी कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है. एम ई मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है. एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है. आपने सिर्फ चेक करना है कि वेदर इट इज अ डायमेंशनलेस. आपने इसकी डायमेंशंस डालनी है, और अगर आपको डायमेंशंस m0, l0, t0 मिल जाती हैं, सो इट इज अ डायमेंशनलेस. यू जस्ट हैव टू प्रूव इट. गॉट इट? सो फिजिकल कांस्टेंट्स का आप यूज कर सकते हैं डायमेंशंस की वैल्यू. दैट इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3. आई एम जस्ट गोइंग टू हैव सम हिंट ऑन क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड. बेटा, द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू गाइज that charge on any body is equal to plus minus NE. Okay? Yes, Sanch, you are back. I know that. So that is homework for you also. Okay? So get the, okay, you are going to get the, okay, cool? You are, so Q is equal to plus minus NE. That is, charge is always there in the form of the quantas, and the smallest quanta is small e, the charge on one electron. So that's why electric charge is quantized. Charge कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो minimum charge will be the charge on one electron. Why? Because at least one electron is going to be transferred, and electron transfer will always be there in discrete numbers. Got it? So that's why it is. Why can ignore quantization of electric charge when dealing with macroscopic? Beta, macroscopic means where large amount of charge is there. Where large amount of charge is there, this n would be so large. The value of this n will be very large, so we cannot, it is not practical to count that number. Then we take it as charge, continuous charge distribution. Continuous charge distribution. Got it बच्चे? कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. और लास्ट क्लास में हमने कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है. कौन सा? लीनियर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. गॉट इट बच्चे? ये था आज का. यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकता है. जी बच्चे? यस अंश, आई डोंट नो वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन द क्लास और नॉट, बट इट्स until you are using fine language, your trolling is not going to disturb me until you are there in the limit of that language. Okay, no issues. Welcome, visit again the class. Okay, you are very welcome. Unless you are there in those brackets, you are fine to be there in the class. Okay, thank you everyone. See you in the next class, guys. Welcome everyone. Bye bye.
Okay, try to share and subscribe the channels for getting the good number. Thank you. Bye bye. Okay, thank you, Ansh.